Hi everyone, this is Monica and welcome back to my channel Monica's Posh and Poise. In today's video, I'm going to talk about English slangs. अगर मैं हिंदी में कहूँ तो slang का मतलब हुआ normal बोलचाल की भाषा. So slang is an informal vocabulary words which are not easily found in a dictionary. और ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्लैंग्स में वर्ड्स यूज़ होते हैं वो आम तौर पर उसको उसी तरह लिटरल सेंस में नहीं लिया जाता है. सो टुडे आई टेल यू few most used slangs in English language. But before starting that, please subscribe to my channel if you haven't subscribed to it and motivate me and encourage me to make better videos for you all in the future. Now, let's get started. The first slang is a piece of cake. That means something that is very easy to do. या हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं तो कुछ भी ऐसा जो करने में बहुत आसान हो आपके लिए, बहुत इजी हो आपके लिए. And the example is, the exam was a piece of cake for me. Next slang is pig out. And the meaning is eat a lot. हिंदी में कहूँ तो बहुत ज़्यादा खा लेना, उसे कहा जाता है pig out. And the example is, I pigged out last night at my brother's wedding. Next slang is ace. And the meaning of the slang is to pass a test with 100%. और अगर हिंदी में कहूँ तो नंबर 1 आना, कोई भी काम करें उस पर आप नंबर 1 आएँ, उसे कहा जाता है एस करना. एंड एग्जाम्पल ऑफ द स्लैंग इज, आई थिंक आई एम गोइंग टू एस द एग्जाम. नेक्स्ट स्लैंग इज स्क्रू अप, मीनिंग टू मेक अ मिस्टेक. कोई भी गलती कर देने को आप अगर इंग्लिश में समझाना चाहें तो आप बोल सकते हैं स्क्रू अप. एंड example is, I'm sorry, I screwed up our holiday plans. The next slang is in no time. Meaning is very soon. जब बिना कोई वक्त लगाए आप बहुत जल्दी कोई काम कर लेते हैं जिसमें बिल्कुल वक्त नहीं लगता है, तो वहाँ आप कहते हैं in no time. For example, we will reach our destination in no time. The next slang is getting hitched, meaning getting married. शादी करने के लिए आप सिर्फ getting married ही नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं getting hitched. For example, Harry and Sally are getting hitched. The next slang is the elephant in the room, meaning that thing which is very obvious but no one is talking about it, or an obvious problem being ignored. For example, the increasing unemployment is our leader's elephant in the room. मतलब कि एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में सबको पता है कि वो एक प्रॉब्लम है लेकिन कोई भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता है. जैसे कि लीडर्स को पता है कि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, लेकिन वो उनके लिए एलिफेंट इन द रूम है, वो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं, डिस्कस नहीं करना चाहते हैं. द नेक्स्ट स्लैंग इज गोइंग इनटू अ रैबिट होल. दैट मीन्स गेटिंग इनटू अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन और टू बिगिन अ जर्नी और अ प्रोसेस which is very problematic. For example, research is a rabbit hole for me and I'm not too fond of that. इसका मतलब है कोई ऐसी स्थिति में जाना जो कि बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है. ऐसी स्थिति में जाने को बोला जाता है getting into a or going into a rabbit hole. The next slang is put a pin in it. That means
coming back to a subject and discussing it later, जिसका मतलब है कि किसी भी चीज़ पर दोबारा आना और उसके बारे में डिस्कशन करना या चर्चा करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, योर प्लान इज़ ब्रिलियंट बट राइट नाउ वी डोंट हैव टाइम, सो पुट अ पिन इन इट. मतलब कि तुम्हारा जो प्लान है बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है इसको डिस्कस करने के लिए, तो हम इस पर दोबारा आएंगे और इस पर बातचीत करेंगे. The next slang is pick your brain. That means to get to see what they know about a particular subject. किसी के दिमाग के अंदर झांक कर देखना कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, उसे बोला जाता है pick your brain. For example, may I pick your brain about this new project? The next slang is rise and shine. Instead of saying good morning, you can say rise and shine. That means to wake someone up, you need to say rise and shine. किसी को जब आप सुबह उठाते हैं तो गुड मॉर्निंग की जगह आप उसे बोल सकते हैं rise and shine. For example, hey sleepyhead, rise and shine. That's it. And the next slang is pour your heart out. That means to be honest about your feelings. आपके दिल में जो भी है उसको सच्चाई के साथ किसी को बता देना, इसे बोला जाता है pour your heart out. For example, he poured his heart in front of her, but she didn't care. And the last slang for the day is take a chill pill. That means to suggest someone that his behavior is rude and इनएप्रोप्रिएट. इसका मतलब है कि किसी को बताना कि कोई आप बहुत हाइपर हो रहे हैं, उसे काम डाउन करने के लिए कहा जाता है टेक अ चिल पिल. फॉर एग्जाम्पल, हे डूड, यू आर बीइंग अनरीजनेबल हियर, टेक अ चिल पिल. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. And if you liked my video, if you learned something out of this video, then please give it a thumbs up and share it. And don't forget to subscribe to my channel. And if you want updates of my new videos, then don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching. Bye bye. Take care.